आपको कहाँ कितना क्लोज जाना था? मेरे को तो किसी को एलईडी पे लाइट है ना, एलईडी पे लाइट है ना, ज़्यादा क्लोज नहीं है। ओके मैं आ रहा हूँ। काम कर रहे हो आप, सेंट्रल ट्रेन में आ जाओ यहाँ पे। हाँ आपको भी प्रॉब्लम नहीं? ओके big round of applause for everybody out there. All transformative movements the world over have been born out of the ideological tenets of human fraternity and compassion. When the greatest minds come together to embrace our collective humanity, a new world order is born. And that day is today. Esteemed guests, ladies and gentlemen, and passionate young minds, all assembled here, a very warm welcome to the first ever Youth Summit on Human Fraternity and Compassion, co-hosted by the Satyarthi Movement for Global Compassion and Zayed Award for Human Fraternity. As we embark on this journey together, we are confident that this Youth Summit will not only inspire us all, but also ignite a spark within us to make a difference. Let our shared commitment to compassion and human fraternity guide our actions, and may the ripple effect of our efforts create a more compassionate and interconnected world for generations to come. Thank you once again. When we feel the suffering of others as our own suffering, with a strong drive to take action, that is compassion. God is not so meager that He has blessed us with only a little of compassion which we have confined to our friends. We need to go beyond that. All that is required is to enlarge our circle of compassion.
designed award for Human Fraternity 2023 ceremony. We are here to honor inspiring people who have spent their lives advocating for human fraternity in their communities and across the world. Antonio Guterres donated his award to the UNHCR. That means UNHCR can use it anytime, anywhere. A crisis, that's the biggest impact that the Design Award has. Grâce à ce prix Zéhit, on a beaucoup aidé et je travaille de faire un centre éducatif, un centre social qui va s'appeler Dar Ahmed. هذه الجائزة تحمل قيما إنسانية كبيرة. أن نطمح لواقع جديد فيه السلام والأمان هما الغاية والوسيلة. لبناء مستقبل ينتهي فيه الظلم. Ce prix nous a permis de renforcer ce que nous faisons déjà, nous a beaucoup motivés. On a pu continuer à assister, travailler avec les associations du quartier, avec les organisations paysannes qui produisent dans ce pays, avec des artistes qui créent dans ce pays. حين يكون لديك نماذج مشرقة من هذا النوع أعتقد أنه ينبغي أن يسلط الضوء عليها، ولذا هذه الجائزة تستحق منصة عالمية لكل محب الخير والسلام. The award winners come from one country or two countries, three countries, but the message of human fraternity will be spread through this award across the globe, and that is very much needed. Il mondo ha bisogno di amore. Sant'Egidio è al servizio dell'unità nella diversità che si costruisce con il dialogo, perché dialogo e amore sono la stessa cosa. Buono, penso ai bambini profughi, soprattutto a quelli che vivono nei campi profughi. Per tutti loro, io credo che la comunità di Sant'Egidio c'è e vuole trovare un posto. Perché la nostra comunità vive nella storia, non fuori dalla storia. People know me as Mama Shamsa, as I found out a lot of youth with another feeling in their lives. When I was with Mama Shamsa, I felt safe. Mama Shamsa couldn't hurt me because having to receive children, taking care of them like her own, mentoring them and showing them the way. This award is not about me. This award is for the thousands of women who are saying, oh, true happiness comes when you uplift others. That's the essence and meaning of living. Together, we can spread the message of human fraternity and keep hope alive.
the least, I have the honor of inviting peace-building advocate Sheila Salim Abu Bakr, who has been at the epicenter of the mediation process around mitigating conflicts and violence in Kenya's Mombasa County. Can we have a big round of applause, please, for all our distinguished guests? ताली और जोर से हो जाए। Welcome all to this August gathering. We would like to felicitate our distinguished speakers with the traditional pagri or the turban, as you will see. In Rajasthan, the state that we are in, the exchange of pagris has been an integral part of all significant ceremonies, unity, respect, and partnership amongst leaders. For generations, the presentation of a pagri from one ruler of a princely state to another marked an understanding of respect and equality. While this tradition has been reserved for men, we believe that women are equal to men in all respects, if not more. हाँ हेलो हाँ हेलो भाई बोल Can we have a big round of applause, please?
I would now like to request all of you to kindly come forward to light the ceremonial lamp. As we light the lamp, let this ignite the spark of humanity and compassion within us. तालियां बजती रहनी चाहिए। May I now request Nobel laureate Mr. Kailash Satyarthi to kindly come up and deliver his address. Thank you. ये हमारे बच्चों में थोड़ा सा कुछ उत्साह कम नजर आ रहा है, क्यों? अभी ज्यादा नहीं है, थोड़ा कम है। कल रात के मुकाबले सारे लोग थके हैं। बैठ जाओ। So now I am going to speak in Hindi. I apologize for those who understand Hindi. But there is a talisman in your hand. When I speak in Hindi, you will be able to listen in Arabic or in English. मैं कह रहा था कि मैं हिंदी में बातचीत करूंगा, बोलो तैयार हैं सब लोग? और जब ये लोग अंग्रेजी में या अरबी में बोलेंगे, तो तुम्हारे हाथ में एक जादू की छड़ी है, वो कान में लगा लिया है तुमने मोड़कर, तो तुमको हिंदी में सुनाई देगा। बोलो अच्छा आइडिया है? कौन कौन पहली बार ऐसे कान में लगा के ऐसे सुनेगा जादू को? हाथ ऊपर करो। सभी लोग, ज्यादातर बार ये हेडफोन लगा रहे हैं। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। दुनिया में पहली बार 500-600 युवा एक ऐसे मिशन के लिए खड़े हुए हैं जिसकी दुनिया को बहुत ज्यादा जरूरत है आज। करुणा और ह्यूमन फ्रेटर्निटी, विश्व बंधुत्व, हमेशा से इसकी बात होती चली गई है, लेकिन हर रोज इसकी जरूरत बढ़ती जा रही है हमारी जिंदगियों में।
जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जो इसमें भाग ले रहे हैं, वो एक इतिहास की रचना कर रहे हैं, वो एक इतिहास बना रहे हैं कि देश के और दुनिया के नौजवान दूसरों के दुख दर्द को, दूसरों की तकलीफ को अपना समझकर और उसका निराकरण करने का सपना लेकर यहाँ बैठे। दूसरों की तकलीफ, दूसरों पर होने वाले अत्याचार को अपने ऊपर होने वाली तकलीफ समझकर उसका अंत करने का संकल्प लेकर यहाँ बैठे हैं और जा रही हैं, उनका समाधान करने के लिए यहाँ बैठे। मुझे बहुत गर्व है कि यहाँ हमारे जो अतिथि लोग आए हैं, मैं उनका स्वागत करते हुए बहुत सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूं कि विश्व बंधुत्व के लिए, ह्यूमन फ्रेटर्निटी के लिए और करुणा के लिए जो दीपक आपने यहाँ जलाया, जो ज्योति जलाई, वो यहाँ रुकने वाली नहीं है, वो इस इलाके में और भारत में रुकने वाली नहीं है। ये रोशनी पूरी दुनिया में फैलेगी, क्योंकि यहाँ बैठे हुए जो नौजवान हैं, आप लोग सारे ये साधारण लोग नहीं है जो अपने अपना कार्यक्रम करने के लिए यहाँ आए हैं। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बच्चे अपने आप जलती हुई मोमबत्ती की तरह है, एक दिए की तरह है जिसकी रोशनी से देश और दुनिया जगमगाएगी। ये वो लोग हैं जो करुणा को अपनी जिंदगी में जीते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बच्चों के ऊपर होने वाले जुल्मों के खिलाफ बाल मजदूरी, बच्चों की गुलामी, बच्चों के ऊपर होने वाला यौन शोषण, बाल विवाह, अशिक्षा, गरीबी, बीमारी के खिलाफ न केवल आवाज उठाई है, बल्कि ये साबित कर दिया है भारत के इन बच्चों ने, अफ्रीका के इन बच्चों ने, यूरोप के इन बच्चों ने, कि अगर कोई बुराई है, अगर कोई अन्याय है, तो उस अन्याय का खात्मा करने के लिए हम किसी नेता का, किसी और बड़े लोगों का इंतजार नहीं करेंगे। हम ये बुराई खुद खत्म करेंगे और ये अत्याचार को खत्म करके दम लेंगे। आप लोग इसके लिए तैयार हैं? कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करो। जो लोग तैयार हैं, बड़े संकोच कर रहे हैं, वो थोड़ी तैयारी में देर लगा रहे हैं। जहां जहां तकलीफ है, गरीबी है, भुखमरी है, गुलामी है, यौन शोषण है, ये बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये साबित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि अगर अकेला आदमी भी ठान लेता है तो दुनिया बदल सकता है, नए इतिहास की रचना कर सकता है। आप लोग अकेले नहीं हैं, आप सारे संसार में फैले हुए हैं। जहां नहीं फैले वहां जल्दी से जल्दी फैल जाएं। मैं सभी का बहुत स्वागत करता हूं। नाम लेने लगूंगा तो मेरा समय खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने एक बात कही है, बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन जो आज इस विषय के अनुकूल है वो है जिसको लेके अभी भारत में G20 हुआ, जिस बात को एक बहुत बड़ा मोटो बनाया गया दुनिया को एक रास्ता दिखाने के लिए
वो है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंब का मतलब है कि हम पूरी दुनिया को, पूरी धरती को न केवल अपना मानते हैं बल्कि अपना परिवार मानते हैं। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, पूरी धरती हमारा परिवार है। उसकी रक्षा के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। आज जो बुराइयां फैली, आज जो अत्याचार और अन्याय बढ़ रहा है, आज जो घृणा का वातावरण दुनिया के हर हिस्से में कहीं तो बढ़ा रहे हैं, आज जो एक्सट्रीमिज्म, जो अतिवादिता है हमारे विचारों में, हमारी राजनीति में, हमारे कार्यों में, हमारे निजी जीवन तक में, हमारे परिवार तक में, उसका मुकाबला करने के लिए हम जिस चीज का सहारा लेने वाले हैं वो धार्मिक उपदेश नहीं है। कोई समझे कि करुणा एक नाजुक फीलिंग है, ऐसा नहीं। एक बहुत बड़ी ताकत और संकल्प की प्रेरणा होती है करुणा। जब आप किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर, किसी के ऊपर होने वाले अत्याचार और अन्याय को अपने ऊपर होने वाले अन्याय की तरह समझकर उसको दूर करने के लिए उठ खड़े होते हैं, तो उसकी प्रेरणा करुणा होती है। करुणा धार्मिक उपदेश नहीं है। ये निस्वार्थ भाव से, ये बिना किसी ईगो के, बिना किसी बदले की इच्छा के कि बदले में कुछ मिल जाएगा, दूसरों की समस्याओं का समाधान करने की नियत होती है और कर्तव्य होता है, काम होता है। When you feel the suffering of others as your own suffering, with a strong drive to take action to alleviate that suffering, can never be a tender emotion. It's a very, very strong feeling which generates tremendous courage, resilience, wisdom, and power to take action to end that suffering. मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। इन 2 दिनों के अंदर हम एक नया संकल्प लेकर उठेंगे यहां से और मिलकर एक दुनिया को, हमारी दुनिया को बेहतर दुनिया बनाएंगे, जिसमें भुखमरी में, गरीबी में, गुलामी में, अत्याचार में, अन्याय में नहीं जिएंगे। जो दुनिया अभी बना के दिए हमें, उस दुनिया को हम स्वीकार करने तैयार नहीं है। जो दुनिया ईश्वर ने हमें बना के दी है, अल्लाह मियां ने जो बना के दी है, एक दुनिया, हम अगर सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी आराधना, सबसे बड़ा धर्म निभाएंगे तो ईश्वर की बनाई उस दुनिया को और बेहतर दुनिया बनाकर ही दम लेंगे। ये हमारा संकल्प रहेगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार जोर के साथ फैसला कीजिए कि आप लोग तैयार हैं, ह्यूमन फ्रेटर्निटी के लिए तैयार हैं, कंपैशन के लिए तैयार हैं। जोर से बोलिए, तैयार हैं। ईश्वर की बनाई हुई दुनिया को और अच्छी बनाने के लिए तैयार हैं। मनुष्य ने दुनिया में जो जो खराब काम कर दिए हैं, धरती का विनाश कर दिया, पानी का, पेड़ों का, समुद्र का, सब हमारे दिलों के अंदर घृणा भर दी, अलगाव भर दिया। इसका अंत करने के लिए आप तैयार हैं? सबके बीच में भाईचारा लाने के लिए तैयार हैं? थोड़े लोग अभी कमजोर पड़ रहे हैं तैयारी में, तैयार हैं? बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। What a truly inspiring speech, कैलाश जी, जो आपने कहा हम सब के लिए। It has not only ignited that spark of compassion within all of us, but it has also cemented to take this even further. Thank you so much. I would now like to request His Excellency Judge Mohammad Abdul Salam to come and deliver his address. जो लोग हेडसेट से सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं कि चैनल अलग अलग है। आप देख लीजिएगा, हिंदी में सुनना चाहे जो ये बोलेंगे तो हिंदी में भी ऑप्शन है और अंग्रेजी में भी ऑप्शन है।
Good morning, everyone. I hope each of you has a headphone. I will speak Arabic. Good. السلام عليكم جميعا. اسم القمة النهارده أو الاجتماع مثير. التراحم والأخوة الإنسانية، هذا عنوان عظيم لتجمع عظيم مع لا أقول قادة الغد ولكن قادة اليوم والغد معا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد للغاية لأن أكون معكم اليوم. في البداية أود أن أرحب بكل وشركائي في مسيرة الأخوة الإنسانية، وأخص بالذكر أخي قيس، فله كل الشكر والتقدير على لا أقول على استضافتنا اليوم، ولكن على جعل زيارتي الأولى للهند زيارة استثنائية تاريخية لا يمكن أبدا أن أنساها. فشكرا لك كيلاش مرة أخرى. أعتقد أن الهدف اليوم من العنوان هو التركيز على الربط المهم بين المصطلحين الأخوة الإنسانية والتراحم. اسمحوا لي في البداية أن أقول لكم شيء مهم جدا باعتباري مسلم. مسلم يؤمن بأن كل الأديان، الإسلام والمسيحية واليهودية والهندوسية والبوذية وكل الأديان والمعتقدات جاءت من أجل تعزيز وترسيخ هذا المفهوم، الأخوة الإنسانية والتراحم بين الناس. مثلا في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه نبي الإسلام محمد وقال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم يكن له رحمة للمسلمين فقط ولكن رحمة لكل الناس. هذا هو شعارنا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام قال: والذي نفسي بيده أقسم لا تدخلوا الجنة حتى تراحموا. هذا كان قسما كبيرا وتأسيسا في دولة الإسلام. لا يمكن أن تدخلوا الجنة حتى تكون الرحمة هي الأساس بينكم. فقال له أصحابه: نحن رحماء فيما بيننا. فقال: ليس فقط لأهلك ولا لخاصتك ولا لذويك ولكن لكل الناس. كل الناس هذا خطاب عام لم يستثني أحد، لم يفرق بين الناس سواء على أساس الدين أو الجنس أو العرق أو اللغة مكان، ولكن هو خطاب عام ودعوة للرحمة. فالتركيز والربط بين هذين المفهومين هو واجب الوقت وهو ضرورة في كل هذه التحديات التي نراها اليوم. إذا سألتموني يعني كيف ترى نجاح هذا الاجتماع اليوم، أقول لكم أن اجتماعكم معا، مجرد هذا الاجتماع، مجرد هذه الوجوه من الشباب التي سوف تقود اليوم وسوف تقود الغد، لابد أن تصر على هذا المفهوم، مفهوم التراحم المرتبط بالأخوة الإنسانية، هو نجاح في حد ذاته. سألوني عن الأخوة الإنسانية والطبيعة البشرية، ونحن نواجه هذا التساؤل كثيرا في إطار عملنا في مشروع ومسيرة الأخوة الإنسانية، وفي مشروع هذه المنصة المهمة لتعزيز وترسيخ مفهوم الأخوة والتراحم بين الناس، وهي منصة جائزة زايد للأخوة الإنسانية. مثلا فيسألون: هل العدائية هي فطرة في الإنسان؟ هل الإنسان يولد عدائيا أو فيه هذه الميزة العدائية؟ أم أنها أمور
تأتي من واقع الصراعات ومن واقع الحاضر ومن واقع المجتمع الذي نعيشه. الحقيقة أنه كل الفلاسفة والجدليون في تاريخنا القديم والحديث أكدوا أن الإنسان لا يمكن أن يولد بفطرة عدائية. لا توجد فطرة عدائية في الإنسان. هذه كلها مكتسبات تولدها الصراعات والمنافسات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وتؤثر في الإنسان وتؤثر في بيئته وفي محيطه وفي تفكيره. لا يوجد أي فرد في هذه الحياة متحيز بأفكار أو مصبوغ بأفكار متحيزة أو بغيضة وعدائية تجاه الآخرين أيا كان أساسها. فكل الأديان دعت إلى التراحم ودعت إلى سعادة الإنسان. هذا ما نؤمن به وهذا ما نتعلمه وهذا ما نستوحي منه فكرة هذا المشروع العظيم، مشروع الأخوة الإنسانية. مشروع الأخوة الإنسانية هو مشروع قديم حديث متجدد، لكن أستطيع أن أقول أن كما يعرف زملائي وزميلتي ليما وقيلاش وإبسي وماما شمسة وغيرهم من الشركاء، أن هذا المشروع نستطيع أن نقول ولد من جديد حينما رأينا أهم الرموز الإسلامية الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب يقف مع أخيه البابا فرانسيس أهم الرموز المسيحية في العالم ويوقع العالم نداء استثنائي، نداء الأخوة الذي لم يفرق بين أي إنسان موجود على هذه الحياة لأي سبب من الأسباب. هذا النداء مثل مصدر إلهام ومثل حركة استثنائية في تاريخنا المعاصر، بل مثل نموذج وقدوة ينبغي أن نستلهمها في حياتنا في كل أنحاء الحياة، سواء في البيت أو في المدرسة أو في الجامعة أو في التعامل مع الجيران أو حتى في التعامل بين الدول على أساس الجوار الذي أقره العرف والقانون الدولي. طبعا الشباب هم أساس التغيير وهم مصدر الطاقة، وأنا سألت نفسي هل جئنا اليوم لنمنحكم الأمل؟ فوجدت أن الإجابة عكسية، بالتأكيد بالنسبة لي عكسية. أنتم من تمنحون الأمل لنستمر ونمضي في هذا الطريق. هذا طريق صعب ليس طريق سهل، ترسيخ الأخوة الإنسانية بين الناس والتراحم والتعاطف، أن تكون هنا في هذا المكان المليء بالهواء البارد لديك شعور وإحساس بهؤلاء المساكين والمشردين في أماكن كثيرة من العالم الذين ربما لا يجدون شربة الماء. هذه فكرة التراحم لا يمكن أن تكون شعارات تلقى ولا هتافات نصرخ بها يمينا ويسارا، ولكن هذه الأخوة والتراحم ينبغي أن تكون حاضرة في كل حركاتك، في كل سكناتك، في كل مراحل ومناحي حياتك. أنا آمل أن تكون هذه القمة أو هذا الاجتماع المهم خطوة أولى لنقف معا يدا واحدة ونصرخ صرخة واحدة في ظل كل التحديات الكارثية التي نمر بها، في ظل الفقر الشديد الذي تعاني منه المجتمعات، في ظل عمالة الأطفال واستخدامهم، في ظل استخدام الإنسان في السخرة والعمل القسري، في ظل هذا الضعف البشري الذي نراه هنا وهناك، وللأسف الشديد في غياب من العدالة والحرية والمساواة. الحرية في كل الأديان هي شعار، ولذا يعني أدعوكم جميعا أن تقاتلوا وتتمسكوا بحريتكم. الله سبحانه وتعالى أراد لنا أن نخلق أحرارا، فلا يمكن أبدا أن نستبدل بهذه الحرية أي خنوع أو خضوع يسلبنا هذا الحق الإنساني الذي نادت به الأديان قبل أن تنادي به المواثيق والحقوق الإنسانية العالمية. أود أن أختم كلمتي. قيلاش، أنت مصدر ملهم. قيلاش، قبل أن أختم كلمتي، أنت حين غيرت مسار حياتك في 20 من عمرك لتقف على هذا الطريق، طريق الأخوة الإنسانية، هذا بالنسبة لنا مصدر إلهام كبير. وأنا مسلم وهذا أخي هندوسي، ولكنه أخي وصديقي. اجتمعنا معا في عمل من أجل تعزيز هذه الأخوة، تعزيز هذه المعاني بين الناس، كل الناس. لم نفكر معا حين أتينا
حين فكرنا في هذا المشروع أننا سوف نعقد هذا المشروع للشباب الهندوس فقط أو المسيحيين فقط أو المسيحيين فقط، ولكن دعونا جعلناها منصة لكل الشباب بغض النظر عن أي اختلاف. أعتقد أن لديكم فرصة تاريخية، لديكم رموز مهمة جدا موجودة، لديكم صناع سلام حقيقيين أتوا من أماكن مختلفة من العالم، ليما، ماما شمسة، إبسي، دكتورة نهلة، محمد، سارة، خديجة، دينا، الشباب. أعتقد إنه لديكم فرصة تاريخية لتحصلوا على مجموعة مركبة من الخبرات تساعدكم على المضي قدما في حياتكم. على سبيل المثال وختاما، أنا مثلا شاب ولدت في قرية بسيطة جدا ربما أشبه بالمناظر التي رأيتها هنا وأنا أسير في الطرقات. أنا عشت البيئة، عشت هذه الحياة البسيطة المتواضعة، ولكن بالإصرار والتمسك بالحرية والتمسك بالعدل. الحمد لله استطعنا أن نحقق شيئا في حياتنا، تعزيز هذا المفهوم العظيم، تعزيز مفهوم الأخوة الإنسانية. أنا أشكركم شكرا جزيلا أن أتيحت لي الفرصة أن أتحدث معكم، وبالتأكيد لنا لقاءات مستمرة طوال اليوم وغدا وبعد غد إن شاء الله. سعيد بكوني معكم وأشكركم وممنون لكل من ساهموا في إنجاز هذا العمل وإنجاز هذه القمة. أشكر فريق إيلاش المتميز والأخ صراف، وأيضا أشكر فريق من جائزة زايد للأخوة الإنسانية، وأشكركم جميعا على حضوركم اليوم. شكرا جزيلا. شكرا. Evening, and this is Jose Ramuzorta, President of Timor-Leste. I'm not able to join you. I would now invite none other than Lema as our very own. She's not an outsider for any of us over here. She's very much a part of our family. A big round of applause for Nobel laureate Lema Boy. Thank you, sir. Thank you, Kalash, George. This together. My remarks will be very brief, and it's going to be directly at the young. I'd like to tell you all a story. And we start stories in Liberia once upon a time, and then you answer time. So once upon a time, you have to say time or else we won't leave here. Time! So there lived a little girl who wanted to be a doctor. She wanted so badly to be a doctor that everything she did at school was focused on becoming a doctor. And she was very smart. She was a leader already before she even turned 15. By the time she was 17, war came to her community. Everything she knew to be precious was destroyed. Her home was destroyed. Her were taken
a message from Nobel Peace Laureate Viret Boshamoy. Good morning, good afternoon, good evening. This is Jose Ramondorta, President of Timor-Leste. I'm not able to join you physically and in New York at this great occasion when my friend Kailash Satyarthi and his devout spouse Sumedha continuing their great mission supported by all of us in pursuing the freedom and the liberation of all child slavery and child labor in the world. Child slavery, child labor is one of the most abominable legacies of centuries and outrageous scandals in this 21st century across the globe, in many countries, in South Asia, in Asia in general, in Africa, Latin America, and even in Europe. There are still children who are engaged in harsh labor and ruthlessly exploited their innocence, their weak bodies to do the work of adults. So the commitment of Kailash and the Sumedha and the people around them have been extraordinary, and I'm proud to be part of it. So the event, the Summit of Human Fraternity and Compassion is intricately linked and reflects the values of the struggle, the mission of Kailash and the Sumedha for the last 3 decades. Each of us, wherever we may be, whether in the West, North America, or South America, in Africa, wherever we are, in any region of the world, in any country, in any state, and any Bible that we may be, as individuals, we can build to improve conditions in our respective communities by engaging in listening, in dialogue, first to use creative ways, whatever they may be, technology, science, because today a lot of youth around the world, young people, they are equipped with knowledge and tools that were not available only 20, 30 years ago. Use your energy and intelligence that come from young people who study, who are educated, who explore science and technology to improve the lives of the poorest among us in the world. In these times of extraordinary risks for the country, for the planet, with unpredictable weather patterns on cyclones, drought, that right now affecting hundreds of millions of people, we should not wait for global governance, for the United Nations or institutions to do what we individuals can do. So think of ideas, initiatives in our respective communities. How can we help contribute to free children from harsh labor? How can we contribute to free children from slave in wherever they are? How can we contribute towards improving living conditions, studying conditions for the children and youth in our neighborhood? And this is a challenge, the invitation I leave with you, because this is the better expression of human solidarity, human fraternity, human compassion. Not with rhetoric, not with more conferences and proclamations, but with concrete action in your school, in your neighborhood, to combat racism, prejudices, exclusion, violence in schools, in neighborhoods, create better conditions for children in your neighborhood, in your school, so that they can study.
mobilize communities to donate vitamins, multivitamin, fruit, vegetables, nutrition for impoverished communities. Because the next few months, the next few years, we are going to see much, much worse conditions because of climate change, but also because of the deterioration of political and security conditions in the world that hamper, make it more difficult normalizing international trade and shipping. With this, I send you all my warmest greetings and a great success for this summit of youth on human fraternity and compassion. Human fraternity means having a sense of unity, respect, and cooperation among all individuals, regardless of their culture, religious, or ethnic differences. It involves recognizing our common humanity and cooperating for a better world. Compassion to me means having a deep understanding and empathy for the suffering and struggles of others, and taking action to elevate that suffering in whatever manner possible. It's a fundamental characteristic that can lead to generosity, compassion, and positive change. I would advise students and summit participants to actively listen to one another, seek common ground, and be receptive to various points of view. Effective communication and understanding are essential for creating bridge and fostering compassion in a world with diverse opinions and benefits. Words of wisdom there coming in from President Ramos Horta and Vidit Bhushamoy. I would now like to call upon someone who our own. Actually, everyone is our own, but this one gentleman that you see on stage, the Chief Minister of the Local in Nepal, Dilli Bahadur Chaudhary. A big round of applause, please. आज हम मानव बंधुत्व और करुणा के बारे में युवा शिखर सम्मेलन में जुड़े हुए हैं। कैला जी, सुविधा जी, जज जी, यहाँ जितने भी एक कार्यक्रम में जुड़े हुए मेरे दोस्त और जब भी हम बात करते हैं युवा पीढ़ी का, उसमें जांगर और जोश होना चाहिए। दूसरा बात, जब भी हम करुणा की बात करते हैं और दया की बात करते हैं, दया और करुणा में भी बदलाव का बात होना जरूरी है। मैं अभी मेरे युवा अवस्था की थोड़ा सा बात करता हूँ। जब मैं 14 साल का था, मेरा माता और पिता मजदूर थे। मेरी माता 16 वर्ष तक बंधुआ मजदूर में उन्होंने काम किया था। जब मुझे लगा कि थारू के साथ क्या अन्याय हो रहा है, क्या अत्याचार हो रहा है, क्यों थारू पीपुल सब बंधुआ मजदूर हो रहे हैं, जिसका पास जमीन था, जिसका पास सब कुछ था, लेकिन अभी कुछ नहीं है। तो सारे लोग उसकी एक ही कॉज था, वो अनएजुकेटेड थे, अनऑर्गेनाइज थे, उनके पास संगठन नहीं था, उनके पास शिक्षा नहीं था। मेरे ग्रैंडफादर ने थंब पेपर लगा के जितने भी जमीन थे वो हमारे सारे जमींदार के उसमें चले गए थे। तो मैंने सोचा कि हम यहाँ कुछ करते हैं। तो एजुकेशन हम हमारे जो नया वर्ष होते हैं उसमें 800 रुपया कलेक्ट करके हम शिक्षा के कैंपेनिंग से शुरू किए थे और युवाओं को कैसे उसमें जोड़ना है, कैसे उसमें शिक्षा के उसमें जोड़ सकते हैं, कैसे संगठन में जोड़ सकते हैं, उसी तरह से मैंने शिक्षा शुरू किया था। और हम पहले एक क्लास चला के और थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करके डांग से कंचनपुर वहां से करीब 500 मिलियन हम घर घर जाते थे, शिक्षा के बारे में समझाते थे, नेपाल के
कानून के बारे में समझाते थे, तो उसी कानून हम इतने लोग जोड़ गए कि हम 3 लाख लोग एक साथ शिक्षा में बदलाव लाने के लिए, बंधुआ मजदूर के परिवर्तन करने के लिए युवाओं का जो सब कभी हम लोग सभी 15, 16, 20 साल के अंदर ही के लोग उस कैंपेनिंग में जुटे हुए थे। अभी कैलाश जी ने जो शुरू किया है, मुझे लग रहा है अब बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि कैलाश जी ने तो देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। सभी की बात भावना होते हैं, वो भावना एक ठाव लाने का जरूरी होता है। ये सम्मेलन वो एक ठाव लाएगा, मुझे लगता है। कभी कभी हम ये भी बात कि हम करुणा की बात करते करते आंदोलन को बात कहीं नहीं भूल जाए, क्योंकि आंदोलन ऐसे शांतिपूर्ण आंदोलन का एक रूप है। जब तक हम शांतिपूर्ण आंदोलन में नहीं जुड़ेंगे, चाहे 40 के बाद, चाहे शिक्षा के बाद, चाहे हम गरीबी के बाद, चाहे बंधुआ मजदूर के बाद, हम तक इकट्ठा होकर अपने आवाज नहीं उठाएंगे, एक साथ हम चल नहीं पाएंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हम आंदोलन करते हैं अच्छे के लिए, हम आंदोलन करते हैं फ्रीडम के लिए, हम आंदोलन करते हैं शिक्षा में सारे बच्चों के जुड़ाने के लिए। इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूं, आज से ऐसे आंदोलन में जुड़े, ये चाइल्ड मैरिज फ्री हो, ऐसे आंदोलन में हम जुड़े, सब बच्चे स्कूल में हो, ऐसे आंदोलन में जुड़े, हम हमारा गरीबी अंत्य हो, ऐसे आंदोलन में जुड़े। हम लोग अब कुछ यहाँ परिवर्तन नहीं, विश्व परिवर्तन के लिए निकले हैं। हमने पहले भुवन जी और मैं, जब यहाँ मैं पिताजी के साथ मेरे पिताजी हैं, हम यहाँ आते थे और भुवन जी और मैं चल के कभी नेपाल के आंदोलन करते थे, कभी यहाँ आंदोलन करते थे। हमने बहुत बड़ा शिक्षा मार्च किया, एक बड़ा आंदोलन के तरह नेपाल में परिवर्तन हुआ। जो भुवन जी आपके साथ अभी कैलाश जी है, सुविधा जी है, यहाँ युवा लीडर हैं जो अभी परिवर्तन के लिए लगे हुए हैं, कभी कोच जाते हैं, कभी मूवमेंट में जाते हैं, भुवन जी आपके साथ हैं। तो मुझे लगता है आज के मूवमेंट से दोनों बात जुड़ना जरूरी है, आंदोलन भी जुड़ना जरूरी है, बंधुत्व भी जुड़ना है। ये आज ये सम्मेलन का वो है। मैंने भी इसी तरह आंदोलन में जुड़ा हुआ था। ये आंदोलन आपके, अभी मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मुझे लग रहा है कि अब परिवर्तन इंडिया से शुरू होकर विश्व में कहीं नहीं रुकेगा और आंदोलन और विकास, आंदोलन और बंधुत्व, आंदोलन और करुणा साथ में चल के आगे बढ़ाकर इसका जरूरी है। यही सब लग के मैं विदा होता हूँ। धन्यवाद। So you just heard our elder brother talking there. A big round of applause once again, please. I would now like to play out a video message that has come in from the United States of America from Mr. Miguel Angel Moratinos, United Nations Under-Secretary General and High Representative for United Nations Alliance of Civilizations. In fact, as we speak, just a few minutes back also, there was a message from him saying that, brother, hope that though I'm not there present physically, I am always there with you in spirit, and hope my message adds a bit of value to the summit. Dear young people, I wish to thank you for inviting me to this interesting gathering. Nothing is more compelling than speaking about youth, human fraternity, and compassion, the three issues that are largely underestimated and underfunded. I therefore commend you for choosing the theme of your fifth Youth Summit around those three important issues. Given the current global context where polarization, tension, and inequalities prevail in many parts of the world, there is an urgent need to address the loophole in our global governance system, building bridges of understanding between diverse cultures, religions, and civilizations
is the reason that of the United Nations Alliance of Civilization. In the world in which the number and frequency of identity-based conflict have risen to a record high, where xenophobia and religious intolerance have created mistrust between people, and where the surge of hate speech, racism, and stigmatization polarize entire community, the work of the Alliance becomes as critical as ever to find a new pathway to trust, unity, and peace around the world. Human fraternity is a noble pursuit toward a better world for all humanity. It puts aside our differences and reminds us of our equal rights that should be enjoyed with dignity and respect, advancing the values embodied in human fraternity is very much needed in our world today. The document of human fraternity brings a ray of hope at the end of a dark tunnel. It charts our course for world peace and living together, one that is built on solidarity, trust, and human dignity. But it's important also to translate the words into action. At UNOSC, we have long recognized the power and potential of young leaders like yourself. Since the beginning, UNOSC placed youth as one of its 5 priority areas for programming, organizing structure for the development and implementation of its various program initiatives, which all play a crucial role in reducing cross-cultural tension and building bridges between communities. We also recognize that the needs of present and future generations are not at odds. In this context, we strengthen our engagement with youth across the world in intergenerational dialogue. We know you are here for solutions, not talking points. We know that can happen if we treat young people as farmers, not as beneficiaries. Another world is possible when unity, solidarity, and respect are at the heart of our effort, where fraternity and compassion are the norm and not the exception, and where the power of intercultural and interfaith dialogue is used as viable tool for creating cohesive, homogeneous, peaceful, and inclusive societies. All of that is possible when we all feel responsible for positive transformation. Finally, I want to thank my dear friend, Mohammed Abdel Salam, and of course, my dear friend, Peace Laureate, my friend Kailash. I'm sorry I cannot be with you. You know that I will be delighted to be with all of you and your people, but my engagement in New York has not made possible that we all share this opportunity together. I hope that this summit will be a great success, and you can count on me and on the United Nations Alliance of Civilization. Thank you very much. I now call upon our Mr. Payal Jangir to come up. Payal, अपना कहानी जो बोलना चाहते हो सबके साथ, जो काम तुमने करके दिखाया वो सबके साथ शेयर करो. Applause, please. सभी को मेरा प्रणाम.
यहाँ से मैं आपको दिखती नहीं इसलिए सामने आ गई। मेरा नाम पायल है और मैं यहीं से हूँ। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊंगी कि हमारे गांव में बाल मजदूरी, बाल विवाह जैसी एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसमें हर घर में ये कहानी थी कि हर लड़का अपनी बड़ी बहन या जो भी परिवार में जो भी लड़कियां होती थी छोटी, उनकी शादी कर दी जाती थी और बाल मजदूरी भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। और उनमें से एक मैं भी थी कि मेरी एक बड़ी सिस्टर थी, तो उसके साथ ही मेरी शादी की बातें हो रही थी, घर वाले शादी की बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी थी और मैं चाहते थे। लेकिन जब मैंने घर वालों को बताया कि मुझे शादी नहीं करनी, तो जो मेरी दादी थी उन्होंने कहा कि तुम अलग थोड़ी ना हो, तुम भी सब में एक ही हो, हमें तो पुण्य प्राप्त करना है। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, तो मेरे घर वाले इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। और जब मैं बाल आश्रम में आई, माता श्रीमती सुमिता कैलाश को ये बात बताई, तो जब मैंने उनको ये बात बताई तो उन्होंने मेरी तरफ देखा बड़े प्यार से। जब मैं बहुत छोटी थी, तो जब मुझे आज मैं उन चीजों को महसूस करती हूँ बड़ी होकर कि उन्होंने मेरे अंदर अस्मिता दीदी की तरह, उनकी बेटी की तरह मुझे देखा कि ये भी मेरी बेटी अस्मिता ही है, और कि नहीं, कोई नहीं है, जो मैं तुम्हारी जो शादी है वो किसी नहीं करने दूंगी तुम्हारे घर वालों को, तुम पढ़ना चाहती हो तुम पढ़ाई करोगी। और माता ने मेरे पिताजी से मेरे घर वालों को समझाया और मेरे घर वालों ने भी इस बात को स्वीकार किया। और जब मुझे 2019 में ग्लोबल गोलकीपर चेंज मेकर अवार्ड से नवाजा गया, तो मेरी वही दादी थी जिनके पास 500 पेंशन के जो रुपए मिलते थे, वो ही देकर कहा कि तुमने मेरा नाम रोशन किया। तो उस दिन मुझे लगा कि हाँ, मैंने अपनी शादी तो रुकवाई, लेकिन जिस तरह से हमारे गांव में और लड़कियों के साथ ये सब हो रहा है, हम सारे जो हमारी बाल पंचायत थी मिलकर के ये नहीं होने देंगे। उस दिन हमारे अंदर, हम बच्चों के अंदर एक करुणा का भाव जगा कि हाँ, हमें जिस तरह से मैं अपने गुरु, अपने मार्गदर्शन श्रीमान कैलाश सत्यार्थी को देखती हूँ कि वो हम लड़कियों में उनकी बेटी की तरह हमें अपनी बेटी मानते हैं, बहन मानते हैं, अपने बच्चों हमें देखते हैं कि उनसे है कि किस तरह से हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, कि हम उनके बच्चे न होकर के आज वो हमें अपने बेटे बेटियों की तरह मानते हैं, तो क्यों ना हम उनके साथ मिलकर के और इस पूरी दुनिया को बदलने में, इस पूरी दुनिया में करुणा में समाज बनाए, करुणा में बंधुत्व फैलाए, ताकि हमारे समाज में आने वाली हर एक पायल अपना सपना पूरा कर सके, हर एक पायल। और आज हम जयपुर में रह करके सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम एक अधिकारी बन करके और हमारे समाज में मैं जहाँ पर भी काम करूँ, हमारे समाज को करुणा में समाज बनाऊं और हर एक पायल, हर एक लड़की पायल बनकर आगे आए। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई साहब जी को कि हम बच्चे कहीं पर भी जाए, कहीं पे भी हमारी जो हो, कि हमेशा चाहे हम कितने ही बड़े हो जाए, कैसे ही रहे, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और हमारे पूरे विश्व को करुणा में समाज बना के रहेंगे। और आज हम यहाँ से जहाँ हमारे इस प्रोग्राम से यही ठान के जाएंगे कि हम बच्चे मिलकर के पूरे विश्व में करुणा में समाज बना देंगे। That's the power of youth. A big round of applause, please. And now I have the pleasure of inviting our sister from Kenya, Sheila. Assalamu alaikum. Namaste, brothers and sisters. All people and God. I am honored today to stand up before you all. Have you ever seen a practical example of disability is not an ability?
Now, can you open your eyes and watch? Ladies and gentlemen, I introduce you to Miss Sheila Salim Abubakar. I was born and raised in a volatile remote area of Kenya. I was born with a special condition called hypotonia. Just like other children living with disabilities, in my community, I missed an opportunity to join schools for the physically disabled. I was taken to a normal school. Where I felt a lot of stigma and rejection, building to my low self-esteem and confidence. At grade 7, I lost my mom in a very tragic and horrible accident which took her life. May her soul rest in peace. This was the most difficult moment in my life. I lost hope and went into depression. I was accepted by Mama Shamsa, the 2023 honorary of the Divine Human Fraternity, who opened another chapter in my life, full of hope, trust, and determination. She taught me how special I am and how productive I can be as long as I believe in myself. Please, my daughter, she said, it's a path. Just soldier on and focus on what you can do best. She repeated these words to me each time I felt like giving up. Let me say, I was born. I therefore took my studies seriously. I envisioned the leader I wanted to become. And now I have a certificate in the early childhood education. Just to be able to explore more of the challenges in the physically handicapped children are facing, and to be in a position to support and offer hope for a brighter future. I am today passionate about community and mobilization and facilitation. I am an active supporter of the campaign against gender-based violence, against women and children, and most importantly, against mental health. To me, human fraternity is compassion, love, and empathy. This is my daily life routine. I practice human fraternity and compassion by nurturing the ability to accommodate the vulnerable and the less young women in the community. My whole life revolves around human fraternity, from supporting children living with disability and encouraging the parents of children living with disability to support and give love to their children. And I'm happy through that I founded a company called the Utamu Halisi, which is a company that introduces an alternative skill for fellow physically challenged youth, as many disabled children unfortunately live by begging and doing crime for them to survive. I am committed to providing them with knowledge and skills so that they can become independent and be great leaders in the future, because inability is not disability. Standing in front of you today, in a country far from mine, but realizing that though we speak different languages, have different cultures, eat different foods, but we might not look alike, but all of us are bonded in our dreams and hope for a better future. This summit will give us, the youth and leaders of the future, an important avenue to share our dreams, to transcend barriers and language
and language and deliver true objective and mission of human fraternity. I want peace, love, and all of us are brothers and sisters. Thank you. Thank you so much, Sheila, for sharing your story and inspiring all of us. We now have two more messages. One coming in from Kerry Kennedy, President of F. Kennedy Human Rights, and from Ms. Gabriela Ramos, Assistant Director General for Social and Human Sciences at UNESCO. Hi, I'm Kerry Kennedy, President of Robert F. Kennedy Human Rights, and I'd like to welcome all of you here today. I hope you learn a mile a minute, and most especially, walk away having met at least 5 people who will help you or whom you can help realize a just and peaceful world. The SMGC is a global movement ignited by Nobel Peace Prize winner Kailash Satyarthi. Grounded in the philosophy of compassion in action, SMGC is committed to globalizing compassion. Globalizing compassion means starting from a stance of loving kindness towards one another. In business, it means prioritizing the impact of decisions, not on maximizing profit, but on how closing this factory, polluting this river, or bringing down prices impacts the most affected communities. It means prioritizing the Universal Declaration of Human Rights, and above all, it means treating one another with dignity and respect. In a world that faces complex challenges and divisions, it is our collective responsibility to form and foster understanding, compassion, and unity among all people, rich and poor, young and old, Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, Buddhists, and Jews alike. We must work together to tame the savageness of man and make gentle the life of the world. Thank you. It is my pleasure to address you at the Youth Summit on Human Fraternity and Compassion. And I commend again the work of Kailash and Sumedha Satyarthi for the good they deliver to the world. I have always been amazed by their leadership. Commitment to give children with tragic past a second chance in life. And this summit, based with the close contribution from children that have become agents for change, is just inspiring. I also believe that the framing of this conversation is the right one, as I have heard Kailash many times talking about how much we have globalized investment, trade, technologies. We have also globalized conflict and financial flows. But we need to globalize compassion. The world demands this, and it's the only way that we will correct the erroneous trajectories in which we are in terms of inclusion, of climate, of understanding. And doing this through youth action is brilliant. And the importance of these events cannot be overstated. Young people are not at the center of decision-making in many countries in the world. They represent only 2.6% of parliaments globally. And youth are usually consistently excluded from decisions that affect them regarding access to education, employment, gender equality. Yet, as we know, for those that are here with us today and those that has been supporting in the different ashrams, young people are innovative, passionate, creative, and when faced with growing crisis, they have this will to advance better solutions. So we need to cooperate with them. At UNESCO, we believe in the power of youth to generate solutions to the global challenges.
For over 20 years, we have created spaces to put their ideas in front of policymakers, to listen to them, and open this dialogue that Kailash is also pushing for this event. We cannot implement values such as compassion and fraternity if half of the world population is excluded from building the future. I also actually want to invite you to the 13th edition of the UNESCO Youth Forum that is going to happen in Paris in November, with a very concrete substance that is related to the social impact of climate change, because we know young people are worried about climate, but they're also worried about the social issue. And we want to have young people perspectives considered when we address this challenge. We have also developed the UNESCO Global Youth Grant Scheme, and Surya Satsoy is going to be there with you, and we want to partner with the foundation, the Satyarthi Foundation, to see how do we advance the ideas of young people to deliver for good. We are also implementing the youth as researchers. This is another initiative that we want to bring more science to the public debates, and also support young people that we want to do science and want to conduct the research, and that emphasize the topics and the issues that young people are interested in. So it's very important. And I feel that the youth as researchers can also feed into the building more and more solidarity as this event is trying to achieve. We believe that human fraternity can only be sustained through intercultural understanding. And we will be advancing many of the programs that we have on the story cycles, on the building intercultural skills, on the question of the framework that we have on intercultural in our publication on Let's Talk. And all of these elements, we put it at your service to build these intercultural competences and to combat discrimination in general, but on migrants in particular. We also have the Silk Road program that we want to share with you, and we will be advancing many of these instruments as we move forward in the cooperation with the Satyarthi Foundation. And I hope that we will be able to close this session with very concrete steps of what we want to do together to leverage dialogue for peace and inclusion. India has the largest youth population in the world. Around 66% of the population is below the age of 35. This youthful population will be essential in driving positive change and in building more inclusive societies. This is why I am super proud to support this youth summit. I would have been there if it was not conflicting with other things, but I'm very excited about the prospect of future collaboration, because this pushing for compassion, pushing for solidarity, this idea that Kailash has been really enacted as a way of living and as a mission, is what we all need to support if we want to improve the conditions of the world. So thank you so much for listening to me, and looking forward for the outcomes of this important event. Messages of partnership coming in from all parts of the world, wishing success to the first ever Youth Summit on Human Fraternity and Compassion. And now, the moment we've all been waiting for. किसके लिए wait कर रहे हैं? अब कौन आ रही है बोलने? And there I have the pleasure in inviting Mrs. Sumedha Kailash over here. But for us and everyone over here, she is Mata, the mother of hundreds and thousands of rescued children.
देश के कोने कोने से विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, साथियों और दुनिया के विभिन्न देशों से आए हुए हमारे साथी भाई बहन और जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, किसी भी तरह से इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, उन सबका पूरे विराटनगर की ओर से और हमारे बाल आश्रम परिवार की ओर से आप सबका यहाँ पर स्वागत। बंधुत्व एवं करुणा पर युवा शिखर सम्मेलन हो रहा है, पर मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, जो आज हमारे यहाँ जितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, और मैं सच में इतनी खुशनसीब माँ हूँ कि सबके एक बच्चा होता है, 2 बच्चा होता है, 10 बच्चे होते हैं, मुझे लाखों की संख्या में बच्चे मिले हैं। और यहाँ बैठे हुए बच्चों में से भी शायद मैं 17 साल बाद मिल रही हूँ, 20 साल बाद मिल रही हूँ। मुझे इतनी खुशी कल से हो रही है, मैं आपको बता ही नहीं सकती, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जिस करुणा की बात को लेकर और विश्व बंधुत्व की बात को लेकर हम आज यहाँ उद्घाटन सत्र में बैठे हैं, तो इसके लिए मैं 2 लाइन में जो मैं प्रतिदिन एक प्रार्थना करती हूँ, मैं वहां से शुरुआत करूंगी। हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। तो हम केवल मनुष्य की बात नहीं करते, हम केवल बच्चों की बात नहीं करते, हम प्राणी मात्र की, जिसमें भी प्राण है, उस सबको जिस चीज की जरूरत है उन्हें कम से कम तो मिलना ही चाहिए, जिससे वो अपना जीवन बिता सके। और ये भी मेरे को बहुत खुशनसीबी है कि मेरे बायोलॉजिकल दोनों बच्चे, उनके तो खून में ही ये दोनों अपनी अपनी तरह से कर ही रहे हैं। और यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, कोई इतने बड़े बड़े नेता बन गए हैं, को हर अपने क्षेत्र में करुणा की बात को लेकर, किसी भी तरह का अन्याय कहीं भी हो रहा है, हर जगह की समस्या अपनी है, हम उसको केंद्रित नहीं कर सकते, छोटे उसमें नहीं बांट सकते, पर अपनी अपनी तरह लोग कर रहे हैं। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है इसको विस्तार देने का। जो विश्व बंधुत्व की बात हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, छोटे वाक्यों में भी कहा है, उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा, अपने क्षेत्र में अपने देश तक सीमित नहीं रखा, पूरी वसुधा के लिए जो बात कही अभी सत्यार्थी जी ने भी कहा था, वसुधैव कुटुंबकम। तो अगर हम परिवार की बात करते हैं तो उस परिवार के लिए हम जैसा सोच सकते हैं, मेरी बेटी पायल ने भी जो बात कही, इसको मौका मिला, इसकी जैसी अनगिनत बच्चियां मेरी यहाँ बैठी हुई हैं, वो भी अलग जगा रही हैं और बच्चियों के दुखों को दूर करने में उनकी सहायिका बनी हुई है और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है। छोटी छोटी बच्चियां, आप सोच भी नहीं सकते, उनसे मिलो, बात करोगे, पर एक दीपक की तरह अपनी अपनी जगह जल के दूसरों को रोशनी दिखा रही है। तो मुझे, मेरे पास तो कोई शब्द है ही नहीं, मैं ज्यादा आपका समय भी नहीं लूंगी, पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि सब लोग मिलकर अपनी जिम्मेवारी को अगर समझेंगे, तभी हम बात को बढ़ा सकते हैं। जैसे समुद्र की लहरें अपने अंदर, अपने आसपास के कचरे को अपनी तेजी के साथ बाहर फेंक देती हैं, ऐसे ही यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति, बच्चों पे ही उनको जिम्मेवारी मत दो, सब बड़े लोग भी, महिला हो, पुरुष हो, भाई हो, बहने हो, छोटे हो, बड़े हो, जो भी हो, क्योंकि हमें सीखना है तो बच्चों से ही सीखना है। बच्चे बिना किसी दुर्भाव के, यहाँ मेरे पास जब नए बच्चे भी आते हैं, अगर हम उन्हें प्यार से एक बार थोड़ा सा देखते हैं तो वो गले से लग जाते हैं, सब कुछ भूल भाल कर। हम बड़े लोग क्यों कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के, छोटी जाति के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी उस देश के नाम पर, हम हमेशा अलग अलग सोचते हैं, अपने सीमित दायरे में सोचते हैं। हमें अपने दायरे को बढ़ाने की जरूरत है, और उस दायरे को बढ़ाए बिना ना मानव बंधुत्व बढ़ेगा, ना करुणा की बात भी अपने तक ही सीमित रह जाएगी। तो आप सब तैयार हैं? तैयार हैं? तो चलो आज ही कम करो, ज्यादा बात नहीं करूंगी, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। जो मानव बंधुत्वता की बात हम कर रहे हैं, सब लोग मिल
छोड़ के नहीं होगा। आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ, ऊपर आ जाओ। एक पकड़ोगे और जिन बच्चों को आता है वो मेरे साथ गाएंगे। मैं सिर्फ गाने के माध्यम से ही आज बात रखूंगी, समय बहुत हो चुका है इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगी, भूख भी लग रही होगी सबको। हाथों में हाथ ले हम जतन ये करें, हाथों में हाथ ले हम जतन ये करें, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, आंसुओं से नहाई न हो, शाम से भी न हो रात हो ना डरी, शाम से भी न हो रात हो ना डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो। पर हम इसके आगे संघर्ष की बात करते हैं, की बात करेंगे। इसलिए 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 संघर्ष की बात नहीं करेंगे, हम की बात करेंगे। करुणा की बात को बढ़ाने का संकल्प से जाएंगे, ये उद्घाटन है और इसलिए सब लोग एक सिर्फ मीटिंग तक सीमित न रखें। ज्यादातर लोग, चाहे एनजीओ हो, माफ करिएगा, चाहे नेता लोग हो, चाहे किसी भी तरह के किस पद पर बैठे हुए हो, सब अपने तक सीमित रहते हैं, काम से काम रखते हैं। उन्हें दूसरे के आसपास क्या हो रहा है, उसको क्या जरूरत है, क्या कष्ट है, क्या दुख है, नहीं देता है। तो हमें पहले एक दूसरे की मदद के लिए अपने दिल को खोलना पड़ेगा और हाथ बढ़ाना पड़ेगा और कदम बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहूँगी धन्यवाद। I am really at a loss of words. मुझे पता नहीं कि क्या बोलना चाहिए अभी इसके बाद, तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। But we now come to the close of this power-packed and energizing inaugural session. I would like to thank everyone on stage for their time, for the thought that they put in together to inspire all of us over here. Can we have a big round of applause, please? I would request the guests to kindly step forward for a panel photograph. Thank you so much to everyone on stage. I would request Kailash ji, His Excellency Judge Abdul Salam and Lema to kindly stay back on stage. The other guests could proceed and take their seats. So this, while we close the inaugural session, we get into the summit, the concept of the summit per se, what human fraternity embodies, what compassion and globalizing compassion, as Mr. Satyarthi has been saying all along, how that can actually be put into action. I would now request our three distinguished guests to share with us their experiences, their thoughts on this very important subject, which will energize the youth present here. This session, which is called Unveiling the Summit, Cultivating Human Fraternity and Compassion, will have a freewheeling conversation between Mr. Kailash Satyarthi,
Lema Bowie, and Judge Muhammad Abdul Salam. The stage is all yours, sir. हेलो हेलो परोमा कैमरा की बैटरी लिया फोन को ला रहा था एक सेकंड मुझे चेक सही करियो और सही कर السلام عليكم عديل مرة ثانية. Okay. Everyone hear the interpreter? Okay. Deepa? Now you hear? Okay. Are you sure? طبعا مرة أخرى احنا سعداء بوجودنا معاكم النهارده. كيلاش وليما هم شركاء في مشروع مسيرة الأخوة الإنسانية. هذا المشروع الحضاري الإنساني العظيم. Okay. Ibrahim, he doesn't know the. Take another one. You can take this.
أقول أن كيلاش وليما هم شركاء في هذه المسيرة. بعد إعلان هذا المشروع الذي ذكرت القديم المتجدد، انضمت ليما دبوي إلى فريق عمل أو فريق كفاح من أجل تعزيز وترويج قيم الأخوة الإنسانية. الآن قاربنا على 5 سنوات ونحن نعمل معا في أماكن مختلفة حول العالم لتعزيز وترويج هذه القيم، نقاتل ونكافح لإعلاء هذه المسيرة. حين انضمت إلينا ليما كان بناء على أن مسيرتها ألهمتنا لتكون سفيرة لهذه الأخوة الإنسانية في مشروعها وثوبها الجديد. أيضا كيلاش الذي ترك مهنته كمهندس في منتصف العشرينات من عمره وانضم إلى تأسيس حركة من أجل حماية الأرض ألهمنا، ولكن هذا المشروع وهذه الوثيقة التاريخية وثيقة الأخوة الإنسانية ألهمته أيضا، فانضم إليها ليكون حاملا هذه الشعلة وليكون أيضا سفيرا لها. كيلاش وليما أنا أود أن أبدأ الحوار بربما سؤال لكما: ما الذي جعلكما تنضمون إلى هذه المسيرة بهذه الحماسة التي رأيناها منكم؟ الأخوة الإنسانية كسفراء لها، وأيضا من خلال خبرة ليما في لجنة الأخوة الإنسانية وخبرتك أنت كيلاش في جائزة زايد العالمية للأخوة الإنسانية. أرجو أن تحدثونا جميعا حول انطباعاتكم عن هذه المسيرة، كيف رأيتموها، كيف رأيتم تأثيرها، كيف ألهمتكم في حياتكم العملية والشخصية. Thank you so much, brother. One day, my very dear sister Lema called me up and she has advised to get in touch with one of her other brother, and that was you. So we have fixed a time on Zoom, and 3 of us had a great conversation where you brought the whole idea of human fraternity, Jayed Award, as well as the human fraternity document, originated from none other than Pope Francis and Grand Imam of Al-Azhar, which I have read. You have sent me the copy, but I did not receive. Somehow it was misplaced, but later on you sent and I got it. What was the origin of this? But the reality is that all my struggle, my movement, my work and my mission in last half a century almost. So I'm not in years, but I'm talking in century now. So for about 50 years, I joined the social movements for democracy, for justice, for equality, for gender equality and so on. At a very early age during my student life. But also during that life, I was deeply concerned about the issues of children who were most deprived, most marginalized, most left out. They were not responsible for their miseries and their sufferings. That was imposed, or that was forced to them by wise people, well-read people, rich people, people in power, who made them slaves, child prostitutes, child soldiers, child laborers,
Children have never been responsible for war. They are not the sinner of poverty or any injustice. They have not created divides, divisions in humanity. They are the living example of human fraternity and compassion. Childhood is the real human fraternity and compassion because they have ability to make new friends. They have ability to forgive others and forget. When they fight with each other, they forget. But we adults, when we fight, we keep this grudge forever and we think to change in one way or other. So some kind of violence is born inside us, but children do not live with that. And that's why this was so close to my heart. So anytime when such kind of invitation or such kind of, offer or request come from anywhere in the world, it could be from Hindus or Muslims or Christians, it could be from Indians or Pakistanis, it could be from Africans or Americans. I used to work with them, and even before the Nobel Prize, I've been working across 144 countries precisely for the cause of children, and that has been my life. So when we talk of human fraternity and compassion, these are not the theories for me. I can say with humility that I always try to live with those values or those feelings as the reality of my life, and I believe that everybody is born with compassion. Compassion is innate. When we fight against any injustice, when we raise our voice against any discrimination or any divide or any atrocity, any abuse of child or adult, it is because there is a deep spark of compassion inside us and which is calling to take action. So for me, compassion or human fraternity are not merely the principles or values or virtues. They are realities which we are all born with, but as we grow, we forget them. We leave behind and we become more and more artificial, more and more selfish, more and more egoist. And so we have to go back and learn from our children how to live with compassion and human fraternity. And that's why it's a very natural alliance which we have formed while coming to the Child Award Judging Committee or while being the part of human fraternity document. We are brothers, we are family. Thank you, George. I always believe that there are more good people in our world than bad people. In Liberia from 1989 up until 2003, we had one of the bloodiest civil wars anyone can think about. At that time, our population was about 3-point-something million. Almost 10% of our population was killed. 500,000 refugees, 1 million internally displaced. So if you look at the numbers, you will know that the entire country was upside down. But then if you look at the number of those who were fighting, they were less than 10%. The warlords were not more than, or the warring factions were not more than 150,000. But they were able to move an entire population of almost 3 million people. If you go to Syria today, it's the same. If you go to South Sudan, it's the same. So our world has come to a place where good people are sitting, whilst evil people are making it to look like they are winning. So every time I get an opportunity to be in a space where I can shine a light on good, I'm interested in doing that. I've been fascinated by the Human Fraternity document in more ways than anyone would imagine.
Because today, what are the major drivers of in our world? Religion. Muslim versus Christian, Hindu versus men. Two of the most powerful figures in the religious history of our world, the Grand Imam and Pope Francis, to come together and say, let's go back to the basics. And the basic is our human fraternity. George, you are from the Islamic community, or you are from Egypt. Kalash is from India. Lema is from Africa. The core is that regardless of who we are, we share one thing in common. And many people do not believe. I have a strong faith in God as a. So most times I reference it, that whether it is you are a Christian, a Muslim, Hindu, Buddhist, whatever you are, and whoever you believe created the world, think about it. As different as we are, we share in common. If you cut Kalash today, the blood that comes out is red. If you cut the Josh today, the blood that comes out is red. If you cut me, the blood that comes out is red. Meaning, the divine who created all of us decided, I'm going to put something in each and every one of you that no one can change. Even if I bleach skin, I can't bleach the color of my blood. Even if I don't like white people, I can't change that. So the fact that the color of our blood is red, it shows that we share a common humanity. And that is what the Grand Imam and the Pope was pushing with the document on human fraternity. So what is our role right now, and why did I think it was important for Kalash to join? It was important because this is the moment for us to mobilize the young people. واو، يعني ليما وكيلاش دايما مصدر إلهام عظيم. كيلاش لقد ذكرت شيئا مهما، الأطفال لديهم قوة خارقة في التسامح. هذا حقيقي. يعني منذ فترة كنت مسافر ورجعت إلى بيتي ووجدت أطفالي الثلاثة في حالة حزن عميق، وأنا تفاجأت وأنا أدخل باب المنزل وجدتهم يقفون إلى جوار المدخل ولديهم حزن عميق. فأنا تعجبت، لماذا أنتم حزانة؟ فقال لي مالك وهو أصغرهم، لقد وجدنا، لا أعرف هل المترجم سيستطيع الترجمة، يسمى عندنا برص أو سلحفاة، يعني ليس سلحفاة ولكن برص صغير من الحشرات التي عادة ما يسهل قتلها، يعني يخاف منها الناس والأطفال. فقال لي هذه كانت تلعب في الجاردن وجرى وراءها أخي الأكبر فماتت، فوجدتهم في حالة حزن عميق. وهنا أنا تذكرت وتوقفت لأفكر في هذه الروح، روح التراحم والتعاطف التي دعت عليها الأديان، ليس فقط بين بني الإنسان ولكن مع كل شيء موجود في هذه الحياة، مع الحيوان، الجماد، مع البيئة التي نعيش فيها. نحن نعاني الآن من كارثة التغير المناخي بسبب فقدان هذا التراحم والتعاطف مع البيئة التي نعيش فيها. هذا كلام مهم جدا ذكرته، وذكرني القصة التي تعلمت منها كثيرا. لما الطيبون أفضل وأكثر كثيرا من الأشرار؟ نعم، هكذا عرفنا لما تعرفون ما الذي جمعني مع ليما وكيلاش؟ كما ذكر كيلاش، هو هذه الروح، روح التحالف من أجل عالم أفضل للجميع لا يستثني أحد. كيلاش، نحن حين دعوناك للقوى الإنسانية وتحدثت مع صديقتي ليما، ليس لأنك بنوبل للسلام، ولكن بهذا العمل العظيم الشاق الذي قمت به من أجل حماية الأطفال
وأكثر ما أثر في حين بحثت في شخصيتك أنك لم تفرق في عملك بين الأطفال على أساس الدين أو اللون أو أي سبب من أسباب التفرقة. هذا كان مصدر الإلهام. لما أيضا حين انضمت إلينا كان مصدر شرف كبير من امرأة أفريقية، لا أقول تعمل من أجل السلام وحماية والأطفال، ولكن تكافح وتقاتل من أجل هذا الهدف النبيل. سؤال أخير حتى أسمع إلى أسئلتكم. كيلاش، أود أن أسألك أنت بشكل شخصي، ما الذي جعلك تغير مسار حياتك من مهندس لديه فرصة للعمل الجيد والعمل في بيئة جميلة ومصدر دخل كبير إلى أن تسير في هذا الطريق الصعب المليء بالأشواك والمليء بالصعاب والمليء أيضا بالتحديات والآلام؟ أرجوك أن تحدث معنا. So, I'm going to answer this question in Hindi, so many of my young colleagues could understand easily. मुझे पता नहीं कि मैं कब बदला, मेरी जिंदगी में कब बदलाव आया, लेकिन बहुत लोगों ने ये कहानी सुनी है, फिर भी मैं बता दूं कि मेरे स्कूल के पहले ही दिन जब मैं लगभग 6 साल का था और स्कूल की सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो मुझे एक मोची का बच्चा जूतों पे पॉलिश करने वाला स्कूल के दरवाजे पर खड़ा हुआ मिला, बैठा हुआ, और वो हमारी तरफ टुकटुकी लगा के देख रहा था कि हम शायद उसे अपने कुछ जूते पॉलिश करने को या सुधरने को दे दें। हमने तो नए जूते पहन रखे थे, नया दिन था, पहला दिन था स्कूल, लेकिन मैं उसकी आंखों की तरफ देखता रहा, बड़ी सोनी आंखों से वो देख रहा था। और जब मैं स्कूल में क्लासरूम में पहुंचा तो जो पहला सवाल मैंने अपनी जिंदगी में अपने शिक्षक से पूछा, सर ये एक बच्चा हमारी उम्र का बाहर बैठ के जूते पॉलिश कर रहा है, ये हमारे साथ स्कूल में क्यों नहीं है हम सबके साथ? क्योंकि मुझे तो मेरे माँ बाप ने सिखाया था कि सभी बच्चे साल के होने के बाद स्कूल में पढ़ने जाते हैं। शिक्षक थोड़ा चौंके, उन्होंने मुझे समझा के बैठा दिया। वे बोले कि गरीब के बच्चे हैं, ऐसे ही काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, माँ बाप का पेट पालते हैं। लेकिन मैं कन्विंस नहीं हुआ उस बात से। मैंने अपने माँ से पूछा, घर वालों से पूछा, सबने लगभग यही बात कही। लेकिन रोज मैं उस जब बच्चे को देखता था तो मेरे मन में बहुत पीड़ा होती थी, बड़ा कष्ट, और मैं सोचता था कि मैं स्कूल जा रहा हूं, ये यहां बैठा। एक दिन हिम्मत करके मैंने उस बच्चे के और उसके पिता से पूछ लिया। बच्चा थोड़ा शर्मीला था, लेकिन पिता ने हाथ जोड़कर खड़े होकर जवाब दिया, बाबूजी मैंने तो कभी सोचा नहीं, मेरे तो बाप दादी यही काम करते थे, अब मेरा बेटा कर रहा। फिर 1-2 सेकंड के लिए वो रुका, आदमी हाथ जोड़े हुए, बोला, बाबूजी स्कूल जाने के लिए तो आप लोग पैदा होते हैं, हम जैसे लोग तो यही काम करने के लिए पैदा हुए। मैं भीतर से हिल गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं रोने लगा। 6 साल का था मैं सोच नहीं सकता था कि ईश्वर ने जब हमको एक बनाया, जैसा लेमा ने कहा कि सबका खून लाल, तो ईश्वर तो अत्याचारी अन्यायी नहीं हो सकता है। हमने ही कोई गड़बड़ की है, समाज ने, लोगों ने।
मन में एक गुस्सा भरता रहा, एक दुख भरता रहा। जो मुझे मेरे घर वाले कहते थे, मेरे शिक्षक कहते थे कि ये तो गरीब के बच्चे हैं, इसी काम के लिए पैदा हुए हैं, मैंने वो कभी स्वीकार नहीं किया। क्योंकि या तो मैं ईश्वर पे भरोसा करूं, जो मैं अब भी करता हूं, या फिर मैं इन लोगों पे भरोसा करूं। तो आदमियों के भरोसे पर मुझे भरोसा नहीं हुआ और मुझे लगा गलत हो रहा है कुछ, और धीरे धीरे करके वो मेरी प्रेरणा बन गया। मैंने दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया। वो नजरिया था कि जो बात कही जा रही है 100 साल से, 200 साल से, 500 साल से, जो हमारे दिमागों में ठूसी जा रही है, जरूरी नहीं कि वो ईश्वर का न्याय हो, ईश्वर का संविधान हो। जो हमारे धर्म ग्रंथों में, सभी धर्मों के भीतर जो बात है, मूल बात है, प्रेम की, करुणा की, बराबरी की, भाईचारे की। तो इस तरह मुझे पहला एक सबक मिला। लेकिन तब इस मुद्दे पर काम करने वाला कोई नहीं था। मैंने अपने सपने का, अपनी भावना का, अपने भीतर के करुणा का सम्मान किया। I followed my heart, considering that my mind will follow me eventually. My career as electrical engineer, as you said, that was very tough those days because I was not born in a rich family or well-off family. My father was a police constable. He passed away when I was young. मेरी कम उम्र में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन मुझे याद है कि मेरा घर कच्चा था, खपरेल का घर था, कच्चे टाइल्स का बना रहता था। हर साल हम लोग उस पर चढ़ के धीरे धीरे उसको सुधारते थे, क्योंकि बारिश में जो पानी आता था गिर के नीचे हम लोगों को सबको पूरी रात परेशान करता था पानी। बंदर उसको तोड़ देते थे ऊपर खपरेल घर को। हम सब घर का काम अपने हाथ से करते थे, परिवार का काम करते थे। तो मेरी माँ का, मेरे पिता जिसकी डेथ हो चुकी थी, वो सपना देखते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। मैं इंजीनियर बन गया, लेकिन मैंने अपने सपने को, अपने संकल्प को ज्यादा अहमियत दी और मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन अभी मैं सोचता हूं कि सारे आंदोलन जो मैंने दुनिया में खड़े किए, मेरे साथियों के साथ मिलकर, मैं अकेले करता। मेरे बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं जो अभी बड़े बड़े आंदोलन चला रहे हैं। मेरे 3 साथी शहीद हो गए, मार्टियर हैं। हमारे साथी जो पुराने हैं, सबको चोटें लगती थी, पहले हमले होते थे, माफिया लोग हम पे हमले करते। मेरे ऊपर भी, मेरे हाथ पांव, कंधे, पीठ टूटे पड़े हैं। मेरे बेटे के ऊपर हमले हुए, मेरे पत्नी, घर, बहुत परेशान रहा, बेटी मेरी। इसके बावजूद भी मुझे लगा कि ये जो चीज है, ये जो चीज है दुनिया में, भाईचारा, अपनापन, ये जो चीज है कि हम सबको ईश्वर के न्याय के आधार पर चलना है, वो न्याय हमें सिखाता है कि हम एक हैं, हम अलग नहीं हैं। जो चीज हमें अलग करती है वो धर्म नहीं हो सकती। मैं एक ऐसा सपना देखता हूं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, कि जब किसी बच्चे के ऊपर कोई जुल्म हो रहा हो, कोई भूखा हो, किसी लड़की के पीछे कोई गुंडे लगे हों, तो वो लड़की चाहे मुसलमान की हो, वो ईसाई की हो, हिंदू की हो, अगर उस लड़की को या उस भूख से मरने आदमी को सबसे नजदीक, भले ही वो हिंदू लड़की हो और उसे मस्जिद मिलती है सबसे नजदीक, या गिरजाघर मिलता है, तो सबसे पहले वो उस गिरजाघर या मस्जिद में घुस जाए, ये मान के कि ये तो खुदा का घर है, इससे ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई हो नहीं सकती। जब हम दुनिया में ऐसा भरोसा पैदा कर देंगे, तो समझो कि हम एक सही मायनों में ह्यूमन फर्टिलिटी बनाएंगे। ऐसे ही मंदिर में कोई मुसलमान की लड़की अगर परेशान है, कोई मुसलमान भूखा है, परेशान कर रहे हैं लोग उसे, और जो मंदिर सबसे नजदीक आए और वो मंदिर और मंदिर के लोग उसे गले लगा के कहें कि तू भी ईश्वर की संतान है, ईश्वर झूठ नहीं हो सकता, ईश्वर न्याय नहीं हो सकता, ईश्वर ने मुझ पुजारी को पैदा किया है और तू मुसलमान है, तुझे पैदा किया है, तू ईसाई है, तुझे पैदा किया है, इस मंदिर से ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं हो सकती। मैं मानूंगा
मैं इस दुनिया का सपना देखता हूं जब हम इस भेदभाव से ऊपर उठ जाएं और जो हमारे कहा गया है हमारे ऋषियों ने, अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत शाम, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा धर्मस्थल है, ये तेरा धर्मस्थल है, तेरा देश है, ये मेरा देश है, ये मेरी दौलत है, ये तेरी दौलत है। ये जो विचार है ये छोटे दिल दिमाग वालों का विचार है। ये हमारे ऋषियों ने कहा है, अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत शाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम। जो चरित्र से उदार हैं उनके लिए कोई हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन नहीं है। उसके लिए कोई स्त्री और पुरुष का भेदभाव नहीं है, उसके कोई ऊंचे और नीचे का भेदभाव नहीं है, क्योंकि परमात्मा का आदेश है वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी दुनिया हमारा परिवार है, क्योंकि हम किसी का भेदभाव नहीं करते। ये मेरी प्रेरणा हमेशा रही। هذا رائع يا كيلاش. إذا الأخوة الإنسانية هي التي جذبتك إلى هذا الطريق كيلاش. ليما، كنت في عشاء مع ليما منذ عام تقريبا. أصبحت الأعوام تمر بسرعة، لا أتذكر عام أو عامين. كنا نتعشى في مطعم ياباني في برج عالي جدا في دبي، وكنا بدأنا الطعام وبعضنا يتحدث عن أنواع الطعام وما هو الذي أعجبه، وفوجئت بليما تقول لي: جاج، أنا أريد أن أتحدث معك في أمر مهم. أريد أن أريك هذه الصورة لبعض الأطفال الذين ولدوا للتو ولا يجدون أي عائل أو موئل في هذه الحياة. هل تود أن تساعد؟ هل أدعو كل من على الطاولة أن يساعدوا هؤلاء الأطفال ولو بشيء رمزي؟ أنا سأتولى أن أجلب لهم الحليب والطعام وأتأكد من وصوله إليهم. ففكرت وقلت: ما هذه المرأة العظيمة التي حازت على نوبل السلام وهي تستحق، ولكنها أيضا في هذا الوقت ونحن أمامنا طعام شهي وفي جلسة جميلة، وهي لا تفكر في الطعام وتفكر في هؤلاء الأطفال، كيف سترجع إليهم وتوفر لهم حليب الرضاعة. لما سؤال أود منك إجابة مختصرة له: ما هو الوقت الذي يمكن أن تقولي لنفسك فيه أنا اكتفيت، تعبت كثيرا وصنعت إنجازات كبيرة وساعدت العديد من الأطفال وحصلت على نوبل للسلام؟ سؤال صعب ولكن أنت تستطيعين الإجابة. شكرا. Josh, is that a trick question? My husband is right here, and I think he's sick and tired of me. He wants me to retire now so that I stay home and take care of him. Anyway, I don't know. I don't think so. As long as I have breath of life, and it's like you read my mind as Kalashji was talking. There's no way we can impact the world. We can do all of the big things at the UN, in Abu Dhabi, in Dubai, wherever we go. But it becomes insignificant if we can't touch the lives of small people. So those two babies have now turned into a whole work. I'll be in New York and Paul J. If you go in our children's room, we have diapers, blankets, and then I'll say, can you help me pack? And he'll put the video on. I'll be like, this one, that one, the other one. And then we go to the hospital to pay hospital bills for mothers who cannot have. George, I've won the Nobel Peace Prize. But winning the Nobel Peace Prize did not make my community to stop suffering. So I must continue to impact the lives of people. I must continue until I'm old. There is no way
I can do all of this, and people in my community don't know that I'm doing these things. I'll give you a quick story. Since we started with the babies, we started now rescuing mothers. There is this practice where women who go to give birth and they can't afford to pay their hospital bills, they are locked up in the hospital and they can't go home. Some of them are there from 1 month to 1 year. So recently we did a research and we published it. But I said to myself, even if this research is published, we must do something. The first time we spent $6,000 to send 20 women home. In July, we spent $4,800. Yesterday, I sent $300 to send someone home. But let me tell you something. I too, this Lima, was once upon a time kept in the hospital because I couldn't afford to pay. I had my third child as a refugee. I remember like yesterday, it was on Sunday, 6 p.m., I got into labor. We got to the hospital, and that was my previous partner, not this amazing man. We got to the hospital, and I gave birth to a 2-pound baby. As a refugee in 1996, they did not put this baby in an incubator because I didn't have money. They didn't give me a hospital bed because I didn't have money. They took me and put me in the hallway on the cold floor. I had a dress, I spread it. The baby didn't have a blanket. So I took him and put him in my dress. That's where he used to sleep. People would pass and throw coins and give me bread. One day, a lady came from her room after 5 days, and she saw me and said, "Come." I had a private room. We went in the private room. She took this tiny baby of mine, wrapped him. She had baby clothes, and I was just sitting there crying. And she said, "Why are you crying?" I said, "Because I'm suffering." Don't cry. You have to be strong. And I kept crying until she got angry. And she said to me, "Shut up. Will you keep crying? If you keep crying, who's going to be strong for these children?" That was my transformation. George, I have been hungry, homeless. I have suffered in life. So this Nobel Prize is meaningful to me, but it remains meaningless if I cannot help one person, if I cannot give a baby diaper, if my compassion on this stage is in words and not in action. I believe that when I was giving this prize, it was God telling me, everything that you have suffered, go out there and do for others. And that is why. So you will keep buying baby milk every time I see you. I'll say, "George, you need to contribute." And let me tell you, for the last 3 years, every time I'm in Dubai or Abu Dhabi, the George will give me $1,000 and say, "It's my contribution to the babies." So George, the babies turn 1 in February, and there are more babies now that we continue to support. So thank you. But again, no price is too big for you to reach to the community in front of you. That is just a part of my story. Quickly, the little boy who was 2 pounds, my son is now 27 and he's doing his PhD in psychology. I'm supposed to ask you a question. So George, let me ask you a question. Every time I send you my writings, and I send you one writing once, and you were very, you said, "Lima, this is my story."
I was in that writing and talked about one of my daughters that everyone say will do nothing. Today she's graduated college. She's broken all of the glass ceiling. What is your story? Why are you interested in humanity? هذا سؤال صعب لأنه العمل من أجل الأخوة الإنسانية، من أجل تعزيز التفاهم والحوار بين الأديان والثقافات هو عمل شاق وصعب، ولكن كما ذكرت في كلمتي أنا نشأت في أسرة بسيطة. كانت والدتي في آخر الأسبوع حينما تعد الخبز لنا، كانت تعد الخبز كل يوم خميس، تصنع الخبز طوال الأسبوع، وكانت لا تفكر بعد أن تنتهي من صناعة هذا الخبز وهي تعطيني تقريبا نصف ما صنعت، وتطلب مني أن أذهب إلى الجيران لأوزع هذا الخبز. كان ظل أثر هذه المعاملة التي تحدث في كل أسبوع معلقا بقلبي وعقلي حتى شاء الله إلى أن ينمو هذا الطفل وأن يذهب ليجلس مع أهم الرموز الدينية في عالمنا اليوم. أتحدث عن الإسلام والمسيحية، الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب مع البابا فرانسيس في أول لقاء وفي أول مائدة طعام تجمعهم، كان ذلك في الفاتيكان في 2018 في بيت البابا. وحين وجدت البابا والإمام يبدأون هذه العلاقة وهذه الصداقة وهما يقتسمان كسرة الخبز، هنا تأكد لدي هذا المعنى العظيم، معنى أن العالم اليوم في حاجة إلى مشاركة هذا الخبز، في حاجة إلى اقتسام الخبز في ظل هذه التحديات الكارثية. في هذه اللحظة تأثرت كثيرا وولدت فكرة وثيقة الأخوة الإنسانية، أول وثيقة في التاريخ الحديث بين هذين الرمزين العظيمين، تخاطب الجميع، تخاطب المؤمنين بالأديان بل وغير المؤمنين بالأديان، هي من أجل الأخوة الإنسانية فقط. منذ هذا الوقت وأنا قررت أن أكرس كل حياتي للعمل من أجل زراعة هذه البذور وغرس هذه القيم. حين كنت في الإعداد لهذه الرحلة التي تجمعني بكم وأتشرف بها كثيرا، أحد أعضاء فريقي قال لي: مستشار، هذا المكان صعب والبيئة بسيطة وفقيرة وقد يسبب لك هذا الأمر بعض المتاعب. فضحكت وتذكرت وقلت في نفسي: هذه بيئتي التي نشأت فيها وترعرعت فيها وتعلمت فيها كل هذه المعاني الإنسانية، معاني الأخوة الإنسانية. فكما ذكرت يا ليما، أنا سأبقى أيضا إلى آخر نفس في حياتي أدافع عن هذه القيم وأسعى لترويجها بين الناس. وكما ذكرت أيضا وأقول لكم جميعا: دعونا نتعلم من هذه القصص الملهمة. ما ذكرته ليما وما ذكره كيلاش هو شيء مثير للغاية. إذا استطعت في كل حياتك أن تساعد ولو إنسان واحد فأنت نجحت في تحقيق مقصود الله في الكون. الله خلقنا لنتعاون، الله خلقنا في كل الأديان نادت بمبدأ مشترك وهو التعارف لنتعاون ولنتكاتف ولنصنع هذه الأخوة الإنسانية التي نحياها. شكرا. And with this, we come to the close of our power-packed morning session for this historic first ever Youth Summit on Human Fraternity and a big thank you to all our dignitaries and distinguished guests and young friends who have come down here to be a part of this history as we unveil a new chapter in our journey together. I would now request all of you to proceed for lunch. Food is waiting, piping hot. Thank you.
we assemble sharp at 2 o'clock for our plenary sessions. Thank you.